अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी इंस्ट्रक्टर। और आज हम पहले लेक्चर करेंगे कमर्शियल ज्योग्राफी का, जो कि इट्स वन ऑफ द टफर सब्जेक्ट्स इन द इंटरमीडिएट सिंध बोर्ड कॉमर्स सेक्शन. Before starting, I would like to tell you a bit about the Vtuitions. Vtuitions is a interactive online free e-learning platform where you can prepare for your intermediate and get the notes, get the guidance, get the video lectures and everything, all without paying any cost. So this is a good startup. So let's see how it turns out. So starting our first lecture on commercial geography intermediate second year. Let's start. We will be starting chapter 2 in commercial geography. I will do chapter 1 later on. So chapter 2 is about the earth. So basically जब आप जो intermediate के commercial geography कर रहे होते हो, तो make sure you follow certain tricks. One of the trick is that you are good in memorizing the numbers. आपको आपकी figures याद होनी चाहिए. Geography is all about two things. Number one is memorizing the numbers, and number two, you got to have a spatial memory. Spatial से मुराद ये है कि you can imagine maps inside your brain, inside your head, and then you can recall those maps while you are writing your exam. And with the help of the numbers that you memorized earlier, and with the maps that you have in your head, you can do very well in your commercial geography exam. So let's start with the chapter 2, Earth. So basically, Earth has, in this chapter, we'll be discussing about the major geographical regions of the Earth, like what are the major geographical regions like land or sea and different things. इसके ऊपर बड़ा important question आता है, लेकिन before you write those questions, you need to know certain facts about the Earth. So coming to the facts, अच्छा ये facts आपको याद होने चाहिए. अगर आपको ये facts याद नहीं हुए, then you won't be able to do the exam. So you need to know these facts, and these are nothing difficult about these facts. So coming to the first fact, Earth is the third planet in the distance from the Earth. Everybody knows that the first planet is the Mercury, second is the Venus, third is the Earth. And this is a commercial geography. Geography is the study of the Earth. So we are going to talk about Earth, which is the third planet. So इसमें याद करने की कोई बात नहीं है. Earth is the third planet. Okay. The second fact is Earth is believed to be 4.5 billion year old. या तो आप इसे 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड याद कर लें, या तो क्योंकि आपकी बुक में 4.5 बिलियन लिखा है, वरना जनरली लोग जो ना 5 बिलियन भी लिखते हैं राउंड ऑफ करके. तो एक फैक्ट तो ये हो गया कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. द सेकंड फैक्ट इज अर्थ इज 5 बिलियन ईयर ओल्ड. नाउ द थर्ड फैक्ट इज अर्थ इज 149,600,000 kilometer away from the sun. This is the third fact. You got to memorize these facts. If you won't memorize it, you won't be able to do good in your question or your exam. तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है. Earth is 149,600,000 kilometer away from the sun. You just memorize it. Third is the fourth point is, again, it is very easy and very basic level, यानी class 5 level fact है. That is, Earth makes a revolution in 365 days. Everybody knows it कि साल में 365 दिन होते हैं. तो जब वो 365 दिन की revolution complete होती है, तो एक साल complete होता है. तो one revolution consists of 365 days. So again, everybody knows it. You need to memorize it. Now, revolution का opposite क्या होता है? Rotation. What is rotation? Rotation is when the Earth is moving around its axis. Revolution is when the Earth is revolving around the sun. So revolution, we already know it is what? It is 365 days in one revolution. But how many elements are there in a rotation? In rotation, there are 24 hours. That is, Earth takes 24 hours to rotate around its axis. और जब one rotation होती है तो क्या होता है? एक दिन complete होता है. Again, it's very easy and simple.
I hope you are understanding the facts. Again, I will recall these facts again. Earth is the third planet from the sun, believed to be 4.5 billion years old or 5 billion years old. Need to memorize it. 149,600,000 kilometer away from the sun. मैं आपको इस तरह कॉमा करके थोड़ा ट्यून में और म्यूजिक में इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. अगर आप इसे 149,600,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में. अगर आप इसे एक सॉर्ट पैटर्न बना के याद कर लेंगे लाइक 149,600,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, आपको हमेशा याद रहेगा. द फोर्थ फैक्ट इज के साल में एक रेवोल्यूशन के लिए देयर आर 365 डेज. तो it's a very easy fact that after revolution there is going to be talk of rotation. Rotation is 24 hours. So pretty easy and basic facts for this chapter. Commercial geography लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं, but if you are good in numbers and if you are good in memorizing the maps, then nothing is difficult. Now I am going to move on to the next slide. Okay, we are continuing the facts about the earth. तो ये है, it has the equatorial circumference of 40,000 kilometers. What is equatorial circumference? तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी है बेसिक, तो अर्थ is in the form of a sphere. It's in the form of a circle. और सर्कल जो circumference होता है, it is a distance from the center around its surface. तो अर्थ का जो equatorial circumference है, it is 40,000 kilometers. You need to memorize it. Again, you need to be good in numbers. फिर अगला फैक्ट है कि अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है, इट इज 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आपको ये याद रखना है, 509,600,600 स्क्वायर किलोमीटर. यू नीड टू मेमोराइज दिस फैक्ट बिकॉज इसका एमसीक्यू भी आ सकता है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. तो इफ यू मेमोराइज दिस थिंग देन यू विल डू वेरी गुड इन योर एग्जाम. अगला फैक्ट तो बहुत ही आसान है, एवरीबडी नोज इट. दैट इज 71% of the area of the Earth's surface is water. And अगर 71 Earth surface water है, तो what would be the rest? That would be the 29% which is land. So these are the salient features or the elements which you need to memorize about the Earth. That is, Earth is the third planet from the distance. It is believed to be 4.5 billion or 5 billion years old. It is 149,600,000 kilometer away from the sun. One revolution takes around 365 days, and 24 hours is comprised in a one rotation, which makes a day and a night. Now this equatorial circumference is 40,000 kilometers. The total surface area is 509,600,600 square kilometer. 71% of the area of the world or Earth is composed of water, and the remaining 100 minus 71 is 29. 29 will be the land. So 1/3 of the surface area is almost land. The 2/3 is the water. Everybody knows it. The pretty basic class 2 elementary school level facts. Now we are going to move on to the next elements in the chapter 2. Okay. This is very important topic which I'm going to cover for you guys. It is called the 4 major subsystems of the Earth. Okay, as you can see from the slide, there are 4 major subsystems in the Earth in our course. Number 1 is the lithosphere. Number 2 is the hydrosphere. Number 3 is the biosphere, and number 4 is the atmosphere. Okay, we are going to start with the first one. It's called the lithosphere. Litho is derived from the Latin word litho. Litho का मतलब होता है Latin में stone. So when you say lithosphere, we mean the land. And when we talk about the hydrosphere, hydro means water in Latin. So when we talk about hydrosphere, it means we are going to talk about water. And when we are going to be talking about biosphere, it means we are going to be talking about the living things. Bio means living. And atmosphere, everybody knows it. Atmo means air. So we will be talking about air. And a very important element in the atmosphere is that
again, it's like the Earth that we studied over in the previous slide, that the water is composed of the 71%, and the land is composed around 29% of the total surface area. So similarly, it's around the same ratio. That is, in the air, 78% is a nitrogen, and the rest is 21% is oxygen. और इन दोनों के अलावा the carbon dioxide, carbon monoxide, helium, the other gases होती है, they compose remaining 1 to 2% or 3%. So this issue is again very important when we are going to talk about atmosphere. That is, 78% is nitrogen, and only 21% is oxygen. So it's very surprising to see and find out that oxygen is composed very less compared to the overall atmosphere in the Earth. But these facts you need to remember. Okay. Coming to our next slide, we are going to be talking about the continents. Yeah, again, it's a very important topic in the commercial geography. There is going to be a big question coming most likely in your exam. So we'll start with the continents. These are the continents which are listed in the slides. Number 1 is Africa. Number 2 is Antarctica. Number 3 is Asia. Number 4 is Australia, जिसे Oceania भी बोला जाता है. Number 5 is Europe. Number 6 is North America, and number 7 is South America. So there are 7 continents, and these are the names of the continents. That is Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, and South America. Also, as you can see from the figure, the map we have on the slide, the Asia is the largest. It's on the left in the orange color. Then we have Europe in the red color. Then we have North America in the green at the top. And then we have South America green at the bottom. We have Africa in yellow, and we have Australia or Oceania in the purple at the bottom right. So these are the continents that you need to remember, and also you need to develop a spatial map in your memory for the continents. जब भी आपके बारे में continent का सवाल आए, तो आपके जहन में ये वाला मैप आ जाना चाहिए. बिल्कुल इसी तरीके से कि लेफ्ट साइड पे आपके अमेरिकास है, राइट साइड पे आपकी एशिया है, सेंटर में अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप है, और बॉटम राइट पे ऑस्ट्रेलिया है या फिर ओशियाना है. Okay, coming to our next topic. This topic is going to be about oceans, and this is one of the major topics in this chapter. As we can see from the slides, there are 5 oceans that we need to cover, and these oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. आपको ये memorize करने हैं, क्योंकि these are the facts which you need to memorize for the exam. So we will be covering these oceans one by one. Number 1 is the Pacific Ocean. Again, because commercial geography is the test of your numbers and your spatial memory. Spatial memory में आपका एक तो मैप की अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग आती है, दूसरा आपकी बेसिकली रटाफिकेशन भी आती है. तो आपको पैसिफिक ओशन में ये वाले फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है. इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू कैन इजीली memorize them, because we are starting from the largest to the smallest. The number 1 ocean that we are going to cover first is going to be the Pacific Ocean. As you can see from the first point, it is the largest. Very simple. Whenever you think of the Pacific Ocean, you will think of it as the largest ocean in the world. Now the second point is, it is extending from the Arctic in the north to Southern Ocean in the south. तो अब ये आप सोचेंगे ये तो मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप if you look at the map that we have on the right side, so you can see that you don't need to memorize anything. If you can recall the map in your brain when you're doing the exam, then you can see that one moment, you can see from the map that it is going to start from the Arctic in the north,
and then it's going to last till southern sphere in the south, and from here also. Pacific Ocean is quite big, so it's going to start from the north and it's going to last from the south. So north में क्या है आपके Arctic है, south में क्या है आपके Antarctica है. You can also write in your exam that it starts from the Arctic in the north and it lasts till Antarctic in the south. It's the same thing. Southern Ocean is around the Antarctica continent. So this thing you need to understand from your memory of the maps, that it starts from the north and it ends from the its end at the south. Again, the third point about the Pacific Ocean is that it's covering 169 million square kilometers. This fact you need to memorize it for your exam. With a coastline of 135,000 kilometers. Again, this fact you need to memorize for your exam. And it is larger than all of the land area of the earth. What do you mean by this point? It means that जो कुछ भी एरिया इस पूरे अर्थ का लैंड मास है, यानी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब का जो लैंड मास है, ये सारा लैंड मास इज स्मॉलर देन द whole of the Pacific Ocean. It starts from the north and ends at the south. It's such a big area. So what are the elements of the Pacific Ocean? That it is the largest. It is extending from Arctic in the north and to Southern Ocean in the south, covering this much kilometer with a coastline of this much kilometer. And you're just describing more to get more points in your exam, that it's larger than all of the land area of the world. So it's a pretty easy point and interesting fact, the last one. So after Pacific Ocean, we are going to come to the second largest ocean of the world, which is Atlantic Ocean. Okay, where is Atlantic Ocean? Atlantic Ocean is over here, as you can see from the map. It starts below the green land and it's also ending at the Southern Ocean. On its left, it's the Americas. On its right, it's the Europe and the Africa. If you can write this thing in your exam, you will get very good points, because your teacher will know that you know the map. You know the map in your head, and he will be very impressed. So how will you describe Atlantic Ocean? You will say Atlantic Ocean is between the Americas on the east, on the west, and Europe and Africa in the east, with Southern Ocean and Antarctica in the south, with Greenland on top. This is how you would describe the Atlantic Ocean, extending from Greenland in the north, Southern Ocean in the south, America in the west, and Europe and Africa in the east. The second largest ocean in the world, covering 106 million square kilometers. You need to memorize this fact, with a coastline of 11866 kilometers. Again, you need to memorize this fact. And इसके बाद एक important यहाँ पे factor या एक element बताया हुआ याद करने के लिए, वो है it occupies 20% of the Earth's surface. यानी अगर total surface area of the Earth है अगर 100, तो Atlantic Ocean occupies 20. So around 1/5 of the area of the Earth's surface is occupied by Atlantic Ocean. और ये Atlantic Ocean वही ocean है जहाँ पे टाइटैनिक डूबी थी. तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं. It's such a big ocean. यहाँ पे Arctic Ocean is and Greenland is in the north, जहाँ पे आइसबर्ग वगैरह आए थे, और जब Titanic was sailing from Liverpool to New York, it sank in the middle in the Atlantic Ocean. Also, one of the important point to remember about Atlantic Ocean is that it is rich in fishing resources. So you need to memorize this fact if you don't know it already. Okay. Now we are going to come to the third largest ocean in the world, which is Indian Ocean. Indian Ocean याद करने के लिए सबसे आसान है. क्यों? क्योंकि already इसमें इंडिया का नाम है. We already know where India is. India is our neighbor. तो Indian Ocean उसके आसपास ही होगा. Yes, you're right. ये India रहा. This is India. This is Pakistan. This is India. और Indian Ocean ये रहा. Can you see? I have
demarcated Indian Ocean in the map. Indian Ocean. So अगर हम, it is the third largest ocean in the world, extending from Africa in the west, Australia in the east. At the top there is Indian Ocean, this Indian subcontinent, and at the bottom there is Southern Ocean or Antarctica. So this is how you will define the boundaries of Indian Ocean, like Africa in the west. Africa in the west, this is Africa. Africa in the west, Australia in the east, Indian subcontinent in the north, and Southern Ocean or Antarctica at the bottom here. So after defining the Indian Ocean, you will memorize these facts, like it is covering 73,556 square kilometer. ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए. With a coastline of 66,000 kilometer. Again, ये आपका फैक्ट आपको याद होना चाहिए. इसके बाद the deepest point in Indian Ocean is a Sundra Trench. ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडियन ओशन का, आपको याद होना चाहिए. ये जावा, सुमात्रा, ये रहा जावा, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में. ये जावा सुमात्रा आइलैंड्स है. यहाँ पे इंडोनेशिया के पास एक आइलैंड्स है, वहाँ पे सुंदरा ट्रेंच है. इट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन. So you need to memorize these facts. Very simple. The third largest ocean in the world, extending from. सारी ट्रिक जो ना आपको जो ना extending from में है. अगर आप इंडियन ओशन की बाउंड्रीज डिफाइन कर देंगे ना एग्जाम में, I can bet you, your teacher will be impressed. Like he will be knowing कि आपको पूरा मैप याद है. कैसे? Africa in the west, Antarctica or Southern Ocean in the south, Australia in the east, and Indian subcontinent in the north. और इंडियन ओशन के अंदर और कौन कौन सी चीजें आती है, अगर आप मैप देखेंगे ना, आप खुद से भी लिख सकते हैं. दैट इज स्विस कैनाल. स्विस कैनाल आपको पता होगा, जो अटलांटिक ओशन को इंडियन ओशन से मिलाती है. इट्स अ टाइनी पैच ऑफ लैंड विच इज इन द इजिप्ट. ये इजिप्ट, मिस्र के अंदर एक स्विस कैनाल आर्टिफिशियली मैनमेड कैनाल है जो कि बनाई गई है. ये मेडिटेरेनियन सी, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, उसको मिलाती है इंडियन ओशन से. तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट दिस थिंग कि स्विस कैनाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. जब स्विस कैनाल नहीं बनी थी तो पीपल यूज टू ट्रेवल अक्रॉस द अफ्रीका, पूरी अफ्रीका के अराउंड केप ऑफ गुड होप एरी. ये साउथ अफ्रीका की जो टिप कहलाती है वो केप ऑफ गुड होप कहलाती है. तो केप ऑफ गुड होप के अराउंड ट्रेवल करके आना पड़ता था लोगों को इंडिया आने के लिए या फिर चाइना जाने के लिए. लेकिन जब से स्विस कैनाल बनी है, क्या होता है, यूरोपियंस दे कैन कम राइट अक्रॉस द मेडिटेरियन सी, अक्रॉस द स्विस कैनाल एंड डायरेक्टली टू इंडिया. So basically, it has shortened the sea travel by thousands and thousands of kilometers. As you can see from the map which I have drawn, that the impact the Suez Canal has had towards the sea traveling. तो इंडियन ओशन के बारे में आप यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज सुएज कैनाल. SUEZ, सुएज, CANAL. स्टोरी आपको लिखिए जो मैंने आपको बताई है, क्या कि जब सुएज कैनाल नहीं बनी थी तो लोगों को अक्रॉस द अफ्रीका ट्रेवल करके आना पड़ता था. केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप, आप केप ऑफ गुड होप को जरूर मेंशन करिएगा एग्जाम में, ताकि टीचर को पता लगे कि आपको केप ऑफ गुड होप का भी पता है. और इसका नाम केप ऑफ गुड होप कैसे पड़ा? क्योंकि जब ये सेलर यहाँ पे ट्रेवल करते थे तो आफ्टर दिस ट्रिप दे यूज्ड टू फील होपफुल कि नाउ हमारा आधा जर्नी हो गया है, अब आधा जर्नी बाकी है. समझ में आया आपको? तो दैट्स व्हाई इसका नाम जो ना केप ऑफ गुड होप पड़ गया था. केप ऑफ गुड होप के बाद आना पड़ता था, लेकिन जब सुएज कैनाल बन गई तो लोग खाली डायरेक्टली मेडिटेरियन सी के होते हुए आना शुरू हो गए. तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडियन ओशन का निकला, आसान है याद करने के लिए. अगले ओशन में आते हैं हम लोग. अगला ओशन है सदर्न ओशन. ओके, सदर्न ओशन इज द 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. डेफिनेटली, क्योंकि हम 4थे नंबर पे कवर कर रहे हैं. वी आर गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो इट इज द 4th लार्जेस्ट and it is extending from. Now, extending from what?
you can define it as you can see. This is the Southern Ocean. It is extending from. It is around the southern tip of the world. That is, it is around the अंटार्कटिका जो है उसके अराउंड है। और आपको मैं पहले एक बात बताता हूँ कि आज से 25 साल पहले देयर वाज नो सदर्न ओशन। सदर्न ओशन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। जब मैं क्लास में था तो वी स्टडीड ओनली 4 ओशंस इन द वर्ल्ड। तो ये 2000 आया था, तो उस वक्त इन्होंने एक नया ओशन डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने खुद बनाया। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, पैसिफिक ओशन की बॉटम टिप, अटलांटिक ओशन की बॉटम टिप और इंडियन ओशन की बॉटम टिप को काट के इन्होंने सदर्न ओशन बना दिया, जो कि अराउंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो इट इज कवरिंग 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये वाला फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 17,968 किलोमीटर्स। ये वाला फैक्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने कौन कौन से फैक्ट्स याद करने हैं? नंबर 1, इट्स द 4th लार्जेस्ट। एक्सटेंडिंग का आप क्या, किस तरह आप इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे? आप इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे कि इट इज अराउंड द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एट द बॉटम एंड इट वाज मेड बाय टेकिंग आउट द बॉटम टिप्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। क्यों? क्योंकि आज से 20-25 साल पहले देयर वाज नो सदर्न ओशन। सदर्न ओशन होता ही नहीं था। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंटरनेशनल, यहाँ पे आने वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO। इसने साल 2000 में डिसाइड किया कि पैसिफिक ओशन की बॉटम टिप, अटलांटिक ओशन की बॉटम टिप और इंडियन ओशन की बॉटम टिप को काट के एक नया ओशन बनाया जाए, जिसका नाम उन्होंने रखा सदर्न ओशन। और इसकी एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है, वो है कि एक करंट होता है। करंट ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, ये ओशन के अंदर जो पानी मूव कर रहा होता है अक्रॉस द ओशन, ऊपर नीचे मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, उसे करंट कहलाता है। तो एक करंट था जिसका नाम था अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जो कि हर वक्त यूं मूव कर रहा होता था हमेशा। जो दुनिया गोल है तो हमेशा पानी यूं आ रहा था, यूं सर्कल में घूम रहा होता था। वेस्ट से ईस्ट से स्टार्ट होता था और यहाँ पे जाता था, यूं मूव करता रहता था अक्रॉस द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने इसी को बाउंड्री बनाया है, इसे थोड़ा सा ऊपर करके, और उन्होंने यहाँ पे सदर्न ओशन बनाया। और उसके अंदर ये जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है वो इन्होंने इसको इसमें शामिल कर दिया। तो जब आप सदर्न ओशन का लिखेंगे और अंटार्कटिक को मेंशन करेंगे, तो आप इसके अंदर ये वाली चीज जरूर मेंशन करिएगा कि इसके सदर्न ओशन के अंदर एक अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट होता है, जो कि परपेचुअली ईस्टवर्ड मूव कर रहा होता है। यहाँ से ईस्टवर्ड मूव कर रहा होता है, यहाँ से, यानी वेस्ट से स्टार्ट होता है, ईस्ट से आता है और वापस अपने आप को ज्वाइन कर लेता है। बिकॉज द अर्थ इज सर्कुलर राउंड, तो वापस अपने आप को ज्वाइन कर रहा होता है। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर रहे हैं ना, अगर एक ग्लोब है अर्थ, तो ये जो हमारा अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है वो यूं नीचे मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स आप लिखेंगे जब आप सदर्न ओशन को डिस्कस करेंगे? दैट इट इज द 4th लार्जेस्ट एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम here to here around Antarctic continent, and it's covering 20 million square kilometer with a coastline of 18,000 kilometer. It is shallow water, and then you will talk about the Antarctic circumpolar current, which is moving perpetually eastwards like this, like this, like this, and there wasn't used to be any southern ocean before year 2000. ईयर 2000 में IHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या किया, उसने पैसिफिक ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन, उसकी बॉटम टिप, अटलांटिक ओशन उसकी बॉटम टिप और इंडियन ओशन उसकी बॉटम टिप को काट के इन्होंने सदर्न ओशन बनाया। तो इस तरह का आप ये फैक्ट्स आप याद करेंगे तो आपके वाला सवाल बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। और मैंने पॉइंट्स और नोट्स भी बना दिए, तो इस तरह भी आपको समझना आसान रहेगा। तो अगले ओशन में आते हैं, द 5th ओशन। इट इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन। इट इज द स्मॉलेस्ट
हाँ, इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज आर्टिक ओशन. आर्टिक. सदर्न ओशन वाज इन द साउथ. इसका राइट ऑपोजिट है आर्टिक ओशन. इट्स इन द नॉर्थ, एज यू कैन सी. एंड एज यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द मैप, it is the smallest, and we are covering at the last also. So we are going from largest to smallest, so it's the smallest, the fifth one. And extending from, आप extending from में क्या लिखेंगे कि it is situated at the polar cap, at the northern hemisphere polar cap, in above North America, above Greenland, above Asia, above Northern Europe. इस तरह से आप इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे. कैसे करेंगे? That it's at the polar cap, northern polar cap, covering the North Pole, above North America, above Greenland, above Northern Europe, above Asia, Northern Asia. समझ में आ रहा है? इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपका स्पेशल मेमोरी ऑफ द मैप क्लियर है तो इसमें आपको 1 मिनट नहीं लगना है याद करने के लिए. सिर्फ आपको रट्टा क्या मारना है, आपको ये अलग फैक्ट याद करना है. वो क्या है कि इट हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 45,000 किलोमीटर्स. ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द एग्जाम. And it is mostly covered in ice throughout the year. Again, because it is around the North Pole, in the Arctic Ocean, it is going to be full of ice. An interesting factor or important point about the Arctic Ocean is that it contains the lowest salt content among all the 5 world oceans. अभी तक हमने जितने भी ओशंस किए हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, तो सबसे कम जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट होता है वो है आर्टिक ओशन. तो ये वाला फैक्ट आप याद करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. अगेन, और उसका लास्ट पॉइंट ये है कि इट इज ऑल्सो वेरी शैलो ओशन. शैलो का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे स्विमिंग करने चले जाएं, लेकिन शैलो का मतलब ये है कि कंपेयर टू पैसिफिक ओशन इट इज वेरी शैलो. तो शैलो से याद आया, इफ वी गो बैक टू द पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. दैट इज कि जो दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट स्पॉट है, डीपेस्ट स्पॉट, इट इज कॉल्ड मरीना ट्रेंच. मरीना ट्रेंच मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MARINA, मरीना ट्रेंच, TRENCH. It is also in Pacific Ocean. So Pacific Ocean is the largest ocean and it is also the deepest ocean. जो कि और के डीपेस्ट जो पॉइंट है दुनिया का वो क्या है? मरीना ट्रेंच है, वही पैसिफिक ओशन में है. हाईएस्ट पॉइंट अर्थ का क्या है? माउंट एवरेस्ट. और डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मरीना ट्रेंच. ये अराउंड फिलीपींस के पास है मरीना ट्रेंच. तो आप ये मरीना ट्रेंच को भी मेंशन कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो gentlemen, we have covered ocean so far, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. इससे पहले हमने क्या कवर किया? हमने कवर किए कॉन्टिनेंट्स. There were 7 continents which were Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America. उससे पहले हमने क्या कवर किया? हमने कवर ये किया कि there were 4 major systems of the earth. लिथोस्फेयर, लिथो स्टोन से निकला है लैंड. हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो निकला है वाटर से. बायोस्फेयर, बायो निकला है लिविंग थिंग से. एंड एटमॉस्फेयर जो कि निकला है एयर से. उससे पहले हमने चंद सैलिएंट फीचर्स ऑफ द अर्थ हमने डिफाइन किए थे, जो कि थे अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड इट इज 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड विद 149,600,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. One revolution equals to 365 days and one rotation around 24 hours. ये इसका circumference है, ये इसका total surface area है, ये इसका percentage area water है which is 71% and 29% is land. तो these element आपने याद कर लिए. इसके बाद आपने 4 subsystem याद किए. उसके बाद आपने continent 7 याद किए. उसके बाद आपने 5 ocean याद किए. 5 ocean कौन से? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, आर्टिक ओशन. पैसिफिक ओशन के ये रही प्रॉपर्टीज, लार्जेस्ट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे आपने डिफाइन करना है. आपने रट्टा नहीं मारना, आपने दिमाग में बस मैप लाना है और आपने डिफाइन कर देना है. जैसे अभी मैं देख भी नहीं रहा लेकिन मुझे पता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इन द सदर्न ओशन
touching the boundary of North America and South America and also Asia and Australasia. बिल्कुल देखिए, मैंने आपको एक न्यू डेफिनेशन बताई है, टचिंग द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हियर एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया. देखिए, नॉर्थ साउथ, आपने ये वाली बाउंड्री कवर की, आपने ये वाली बाउंड्री कवर की, आपके जो ना आधे मार्क्स यहीं पे आ गए, क्योंकि टीचर बोलेगा भाई इसको तो सब पता है, इसको तो पूरा मैप याद है. फिर आपने जो पॉइंट्स रटने और जो आपने पॉइंट याद करने, मेमोराइज करने, वो तो आपको पता ही है, वो आपने मेंशन करना है. फिर आपने कोस्ट लाइन को मेंशन करना है. फिर आपने कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, आप स्लाइड से भी देख सकते हैं. पैसिफिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट. एक्सटेंडिंग फ्रॉम में आप किस तरह बताओगे, क्योंकि सारी ट्रिक एक्सटेंडिंग में है. एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट एंड सदर्न ओशन इन द साउथ. बस ये आपने बता दिया, आपके आधे मार्क्स तो कंप्लीट हो गए. अब फिर आपने जो मेमोराइज करने वाले फैक्ट है वो आपने बताने हैं. दैट इज कवरिंग 106 million square kilometer with a coastline of this and it occupies 20% of the earth surface, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और rich in fishing resources. अगला कौन सा था, अटलांटिक ओशन में इंडियन ओशन, जो कि मैंने अभी काफी डिटेल और काफी अच्छे तरीके से कवर कराया. दैट इज थर्ड लार्जेस्ट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ, सदर्न ओशन इन द साउथ, अफ्रीका इन द ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट. इसके अंदर आप सुएज कैनाल को भी मेंशन कर सकते हैं. इसके अंदर आप पूरी कहानी बता सकते हैं केप ऑफ गुड होप की, और पूरी किस तरह लोग पहले जो ना अटलांटिक ओशन के थ्रू बड़ा डिस्टेंस कवर करके आते थे, फिर सुएज कैनाल बना तो वो डिस्टेंस कितना शॉर्टन हो गया. और इसके अंदर आप जो ना इसके डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन भी बता सकते हैं, जो कि सुंदरा ट्रेंच है, एंड वेयर इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया. चौथा ओशन है हमारा सदर्न ओशन. ये ऑलरेडी मैंने अभी डिटेल में कवर कराया था, इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एंड इट इज एट द बॉटम टिप ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट. और इसको हमने बनाया था 2000 में. IHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पैसिफिक की सदर्न ट्रिप, अटलांटिक की सदर्न ट्रिप और इंडियन ओशन की सदर्न ट्रिप काट के ये ओशन 2001 में क्रिएट किया था. उससे पहले दुनिया में खाली 4 ओशन होते थे. साल 2000 में दुनिया में 5 ओशन हो गए, जो कि सदर्न ओशन 5वां खिलाया गया. और उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि इट इज यू नीड टू मेंशन इट, दैट इज अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट. ये पानी के अंदर करंट होता है, ये बिजली का करंट नहीं है, ये पानी का करंट है, जो कि परपेचुअली ईस्टवर्ड मूव कर रहा होता है अक्रॉस एंड अराउंड द अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, सॉरी. इट इज, और इसके अंदर एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज वेरी शैलो इन नेचर. आखिरी ओशन जो है वो है आर्टिक ओशन. इट इज स्मॉलेस्ट एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप. और इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के ही मार्क्स हैं. वो क्या है, इट इज एट द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड, नॉर्थ ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न एशिया. जब आपने इस तरह लिख दिया ना, तो आपका टीचर बोलेगा कि इसको तो पता है. अगला क्या, कोस्ट लाइन आपने डिफाइन करनी है. फिर आपने ये ऑब्वियसली, फिर आपने एक जनरल फैक्ट बताना है कि इट्स मोस्टली कवर्ड इन आइस थ्रू आउट द एयर, और इसका सॉल्ट कंटेंट दुनिया में सबसे कम है अमंग द ओशंस, एंड ऑल्सो इट इज शैलो इन नेचर. तो जो 5 ओशंस हमने पढ़े हैं, जो आखिर के 2 ओशन है, जो सदर्न ओशन है और आर्टिक ओशन है, दे आर द शैलो वंस, द रेस्ट वंस आर द डीप वंस. आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हम बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि फ्री कंटेंट और फ्री लेक्चर्स अवेलेबल किया जाए. एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, वी आर आस्किंग यू टू ज्वाइन आवर फेसबुक एंड Instagram, Twitter and WhatsApp communities. Also, you can directly sign up for free on a website. It's called Vtuitions.com. Here you will find the lectures, you can find the free video lectures, you can find the notes, you can find the quizzes and everything in a very manageable and presentable format.
which will help you in your exam. Thank you for watching. This was Yusuf Shakil, your Commercial Geography instructor. आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज.